dear students, this is the first video of chapter number 13, a globe, latitudes and longitude from the standard 6th subject is SS and part is geography. So in this video we discussed about the new words of the chapter. By learning this new word, we get the idea about that what we learn in this chapter, and also these words make us understand to our chapter better. So let's start our new words. Globe. We represent the earth by a spherical model called a globe. यानी स्फेरिकल मॉडल जो है अर्थ का, जो लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, लोकेशन ऑफ द ओशंस एंड इक्वेटर, जो जहाँ पर सिचुएटेड है एग्जैक्टली सेम वही एक मॉडल जो है अर्थ का, जो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, उसे ग्लोब कहते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब. Centrifugal force. When an object that is moving around a central point appear to be moving from the center by some force, यानी कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पॉइंट से एक खास तरह का फोर्स जो है वो बाहर की ओर, यानी सेंटर से सरफेस की ओर जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ के मॉडल जो है, यानी अर्थ का जो शेप है, उसके इक्वेटर के पास हमें बल्जेस देखने को मिलते हैं. लेट डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड. जियोइड. द शेप ऑफ द अर्थ इज रिफर्ड एज जियोइड. यानी कि अर्थ का जो शेप है उसे पर्टिकुलर जियोइड कहते हैं. तो किस तरह का अर्थ का शेप है, लेट डिस्कस दैट. इन नॉर्थ पोल साउथ एंड द साउथ पोल साउथ, यानी एंड ऑफ द बोथ द साइड्स, एंड फ्रॉम दिस इज द इक्वेटर. The earth has been flattened from this and this side, and from this and another part have bulges found. यानी कि ये दोनों ऊपर और नीचे की ओर से अर्थ जो है वो फ्लैट यानी कि चपटा है, और यहाँ से बल्जेस यानी कि थोड़ा उभरा हुआ है. यानी हमारा अर्थ जो है वो पूरा गोल नहीं है, इसीलिए उसका जो शेप है उसे रिफ़र करने के लिए या उसे टर्म करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम जियोइड कहते हैं. ऑर्बिटल प्लेन. The path on which the earth revolves around the sun. यानी कि path on earth revolve around the sun. यानी अर्थ जिस रास्ते पर और जिस पाथ पर सन के आसपास अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है या रिवॉल्व करता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. लेट डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ द path on which Earth is moving and complete his revolution around the sun, and this is the sun. So that is called orbital plane. Let's discuss next one. Latitude. The horizontal lines that run east-west directions are called latitudes. Horizontal lines. These all are horizontal lines. These are run from यानी this is the east or west, यानी east to west जो line, ये this all are the imaginary line. यानी this kind of line has been not drawn in our earth. यानी अर्थ पर ऐसी कोई खास लाइन ड्रो नहीं की है, but this is all are the imaginary line. तो वैसी horizontal line जो ईस्ट से वेस्ट की ओर अर्थ में जाती है उसे latitudes कहते हैं. In this video we learn about some special latitudes like Capricorn, Cancer, Equator, Arctic and Antarctic Circle. Longitudes. When the vertical lines that run in a north-south directions are called longitudes. यानी कि imaginary vertical lines, this is the north part and this is the south part, which are run from a north to south direction like this, which north to south direction, these lines are called longitudes. At a 0 degree there is a one special longitude that is called prime meridian. The prime meridian is divided the earth into two equal parts. One is a western hemisphere and another one is a eastern hemisphere. Equator. The latitude which is situated at the 0 degree in a globe is called equator. यानी कि
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती है दैट इज़ कॉल्ड लेटीट्यूड्स। वैसे ही वन इज़ अ स्पेशल लेटीट्यूड विच इज़ सिचुएटेड एट द 0 डिग्री, दिस वन in our globe. This is called equator. An equator divides the globe into two parts, first in a northern hemisphere and southern hemisphere. इक्वेटर के ऊपर की ओर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल देखने को मिलता है, और इक्वेटर के साउथर्न साइड पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल देखने को मिलता है। लेट डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड दैट इज Southern Hemisphere and Northern Hemisphere. Equator or the Great Circle divides the Earth into two equal parts are called Southern Hemisphere and Northern Hemisphere. Here one word is used, that is a Great Circle. That means Earth का जो भी एक circle complete करता हो from like this, from like whether it's like a horizontal या vertically full circle या full round जो है वो globe का complete करते हो, that is called Great Circle. So equator complete the one around one circle around the earth, so that is why it is also called the great circle. So equator has divided the earth into two equal parts, as if I already told you कि equator जो है वो अर्थ को exactly दो टुकड़ों में डिवाइड करता है. फर्स्ट वन इज़ अ नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड नेक्स्ट वन इज़ अ southern hemisphere. This is the north pole situated and this is the south pole. These are the end of the globe. Let's discuss the next one. Eastern hemisphere and western hemisphere. Prime meridian and great circles divide the earth into two equal parts are called eastern hemisphere and western hemisphere. That means we already discussed about what is called the great circle. Like a great circle, another is a prime meridian. Prime meridian is a special longitude which is situated at the 0 degree. The whole world that accepted this 0 degree line as a prime meridian. So prime meridian passing through the globe and make the two equal part of the globe. First one is the eastern hemisphere and western hemisphere. Tropic of Cancer. Latitude situated at the 23.1.5 या 0.5 भी आप कह सकते हो degree north in a globe. It's called Tropic of Cancer. Let's discuss with the help of a picture. That means first is equator, that's divide the earth into two parts, northern and southern. So in the northern part at the 23.1.5 degree, one latitude that pass, this latitude is called Tropic of Cancer. So this is found in a northern side. Let's discuss the next one. Tropic of Capricorn. Latitude is situated at 23.5 degree in a southern in a globe. It's called Tropic of Capricorn. So again, this one is equator situated at the 0 degree. So 23.1.5 degree साउथर्न साइड यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.1.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड सिचुएटेड है दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोथ आर situated at the 23.1.5 degree, but the difference is that Cancer is situated in the northern side while the Capricorn is situated at the southern side. So this is the difference between found in this latitude. Let's discuss the next one, that is a Arctic Circle. The latitude situated at the 66.5 degree north in a globe is called Arctic Circle. This is the equator. In a northern side 66.1.5 degree will be the longitude pass, that is called Arctic Circle. यानी फर्स्ट 0 डिग्री पर इक्वेटर, देन 23.1.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन 66.1.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में रहेगा आर्टिक सर्कल.
Antarctic Circle. Latitude is situated at the 66.5 degree south in a globe is called Arctic Circle. यानी जो latitude 66.5 southern globe में situated है, that is called Arctic Circle. Let's discuss with the help of picture. Again, this one is equator at 0 degree, 23 1.5 southern side, Capricorn. And now we learn about the Antarctic Circle, that is a 66 1.5 degree southern side. The Antarctic Circle जो है वो after Capricorn. But the difference between the Antarctic Circle and Arctic Circle is that Arctic Circle is situated at the north and this one is a south, but degree of the both are same. South Pole. Latitude situated at the 90 degree southern in a globe is called South Pole. This is the southern hemisphere. So, and this one is a northern hemisphere. In southern hemisphere, 90 degree, the latitude is passing from east to west direction is called South Pole. South Pole and North Pole are very cold. In this both side, Earth has been flattened. North Pole. Latitude situated at the 90 degree north in a globe is called North Pole. यानी northern side पे 90 degree पर जो latitude situated है, that is called North Pole. Equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, and then last one is a North Pole. So North Pole is situated at the 90 degree in a north and south, and South Pole is situated also in a 90 degree but in a southern side. Heat zone. The Earth has been divided into heat zone according to the amount of heat received by its various पार्ट. यानी अर्थ के वेरियस पार्ट में से सन से आने वाली हीट का अमाउंट, यानी किस पार्ट पर कितने अमाउंट्स में हीट गिरती है, उसके अकॉर्डिंग अर्थ को जो है वो हीट जोन में डिवाइड किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू दैट द हीट जोन has been divided into the three parts. First one is a torrid zone, second is a temperate zone, and third is a freeze zone. So let's discuss our first zone, that is a torrid zone. So 23 1.5 degree northern side to 23 1.5 degree southern side, this and this, and from this to this part is called torrid zone. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट इज़ अ टोरिड जोन. टोरिड मीन्स वेरी हॉट, यानी यहाँ सन की जो रेस है वो डायरेक्ट गिरती है, इसकी वजह से टोरिड जोन है उसे हॉटेस्ट जोन कहा जाता है. एंड वन मोर थिंग दैट द इक्वेटर इज ऑल्सो पास्ड इन दिस जोन. नेक्स्ट दैट इज अ टेम्परेट जोन. सो 23 1.5 in a northern hemisphere to 66 1.5 degree northern hemisphere, यानी from Arctic Circle to Tropic of Cancer, this part is called North Temperate Zone. So in this area the sun rays are slanted, so this zone is also called the moderate zone because sun rays are slanted. That's why there is not hot as torrid zone is hot. सो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है. दैट्स वाई इज़ कॉल्ड मॉडरेट जोन. लेट्स डिस्कस द नॉर्थ टेम्परेट जोन, दैट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल. दैट मीन्स 23 1.5 साउथ टू 66 1.5 degree southern side. दिस पार्ट इज़ साउथ टेम्परेट जोन. लास्ट इज़ फ्रीज जोन. So north freeze zone is situated between the 66 1.5 degree northern to north pole, यानी कि 90 degree तक, and then south freeze zone that is situated 66 1.5 degree southern to south pole, यानी 90 degree. So this both are a freeze zone, and the freeze means very cold, यानी यहाँ पर सन की जो रेस है वो बहुत ज़्यादा हमें slanted देखने को मिलती है.
So these both areas have extremely cold climates. Prime meridian. World have agreed on the center line of a longitudes passing through the Greenwich in England as a zero line. This is called prime meridian. As we already discussed in this video about the prime meridian, that longitude, which is a passing exactly between the earth and it is situated at the 0 degree, this one is the whole world accepted as the prime meridian. और अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन ही पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो एडजस्ट किया जाता है, और प्राइम मेरिडियन जो है वो इंग्लैंड यानी ग्रीनविच में से पास होती है. सो प्राइम मेरिडियन का वेस्टर्न साइड जो है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड जो है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. ग्रीड, a network of lines formed by latitudes and longitudes on a globe or a map. यानी मैप पर हमें जो longitudes, these are longitude which are runs from a north to south directions, and a vertical lines same east to west direction the lines are run, and horizontal are called latitudes. So the network of longitudes and latitudes is called ग्रिड. यानी पूरी मैप को और पूरे वर्ल्ड को हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका पूरा जो नेटवर्क हमें देखने को मिलता है उसे हम ग्रिड कहते हैं. Okay, now I finish my video. So you have to write this new words in your CW book. You don't need to make the separate part. Just continue as our chapter is going.